औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ कहीं भी रखे, अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुमा आमीन। क्लास 8 की इंग्लिश है और इसका जो है वो आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे, अ शॉट इन द डार्क। आज की वीडियो में जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। कॉम्प्रीहेंशन इसका है नंबर 1 पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जो इसके ऑथर हैं जिन्होंने ये लिखा है चैप्टर, जो स्टोरी है वो है हेक्टर हग मनरो। ठीक है, ये आप लोग जो है वो लाजमी देखा करें इनका डेट, ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ। थोड़ा बहुत हाउनो जो है वो पोएट के बारे में और आपको उसके ऑथर और राइटर के बारे में ज़रूर होनी चाहिए। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर जो है वो अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। आप एक दफ़ा क्वेश्चंस यहाँ से देख लें ताकि मैं आप लोगों को इसके आंसर यहाँ से करवा दूँ आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए इज़, व्हाट पोजीशन डज फिलिप स्लेथरबाय होप टू गेट? आंसर इज, फिलिप स्लेथरबाय hopes to become the parliament for the country of Yorkshire. B is, who is Philip Slatterby on his way to visit? Philip Slatterby is on his way to visit Mrs. Saltman Jago because if she approves of him, she will support his ambition to become the MP for Yorkshire. Question number C is, how does Betty know that Philip Slatterby is going to visit Betty's mother? Answer is, Betty knows that Philip Slatterby is going to visit Betty's mother because he hears Slatterby club acquaintance saying that through the train window. Question number D is, where is Betty going? Betty is going from London to countryside to go finishing for the weekend. Come to the another part, that is, these questions are more challenging. Discuss them first. Who is other man traveling to Brill Manor and what are the three things we learn about him? Answer is, the other man traveling to Brill Manor is thought people. We learn that he is an important lawyer. He has traveled on the same train. He is noisy, talks a lot. He is not the sort of man to notice an absorbed silence. He likes and knows about cars, and he knows Mrs. Saltman Jago well. Question number I is, which part or parts of the story show us that Philip Slatterby thinks highly of himself? Answer is, the part of the story that shows us that Philip Slatterby thinks highly of himself. Paragraph at the top of page 9, in which Slatterby imagines impressing others with his story. Come to page number 14, that is exercise number B, working with words. Question number B is, the story contains many words to do with looking. Here is a difficult of these words and a couple that do not appear in the story. Use them in sentences of your own. Scrutinize, speed, picked out, searched, spotted, fixed eyes on, glanced, ऑब्जर्व्ड एंड स्टीयर्ड। इसको जो है वो अपने सेंटेंसेस में बनाते हैं। आप अगर चाहें, अगर आपको ज़्यादा बेटर आते हैं तो आप अपने ओन वर्डिंग्स में भी इसको बना सकते हैं। स्क्रंचिनाइज्ड का है, द कैशियर स्क्रंचिनाइज्ड द पेमेंट। स्पीड, द पुलिस स्पीड द पीपल
and caught the suspected one. Picked out, the teacher finally picked out the children whose handwriting was excellent. Searched, we searched for the mouse in each and every corner of the house. Spotted, the police at last spotted the thief hidden in the garden. Fixed eyes on, the teacher fixed her eyes on winners and praised them. Glanced at first glance, I impressed by his performance. Observe, the teacher observed that her class is a group of talented children. Stared, the mother stared at the spots of ink he made on his shirt. Stare का मतलब होता है घूरना. Question number C is look at the first paragraph of the story. Find words and phrases that describes Philip Slatterby's feelings of contentment. तो ये जो है वो इस तरीके से हमें इन्होंने वर्ड्स दिए हुए थे, तो ये हमने इसको पैराग्राफ में लिखकर स्टार्टिंग वर्ड हमें पी दिया हुआ है, दैट इज़ प्लेजेंट. देन है एफ, इट इज़ फीलिंग. ए इज़ एग्रीएबल. जी इज़ ग्रेटिफाइड एंड डी इज़ डिलाइटेड. ये आप लोग जो है जब अपना पैराग्राफ देखेंगे इसका फर्स्ट, तो आपको ऊपर से ये इजीली मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है कैन यू यूज़ द फॉलोइंग इनटू टू वेज टू ब्रिंग आउट देयर डिफरेंट मीनिंग्स. हॉरिबली, टेरिबली, फ्राइटफुली एंड प्रिटी. इसको भी लिखते हैं हम. हॉरिबली, द मैन began to scream horribly. The toilets in that restaurant were horribly ill-smelling. Terribly. After her husband's death, she felt terribly alone. Number 2 is I am terribly sorry to have kept you waiting. Frightfully. Lawrence was so frightfully strict with the children. I am frightfully sorry, but I can't see you today. Pretty, the vessel is very pretty little. Creatures. The future looks pretty dismal right now. Question number 3 is page number 16. Make interesting sentences of your own using the following: ought to feel, ought to go, ought to write, ought to have been, ought not to hear, ought he to, ought to know, ought not to play, ought they टू रिटर्न. अच्छा, ought to जो है वो बेसिकली यूज़ होता है शुड की जगह पर. जैसे आपको चाहिए कि आप ये करें, ought to feel, आपको जो है वो ऐसा फील करना चाहिए. ought to go, आपको ऐसे जाना चाहिए. तो आपने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं. कुछ सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं. ought to feel, we ought to feel happy about the results. ought to go, I ought to go and visit her. ought to write, you ought to write a letter to your mother. ought to have been, you ought to have been doing your homework. ought not to hear, young children ought not to hear such language. मतलब कि अब ought not का मतलब है कि नहीं चाहिए. ought he to go there. ought to know, you ought to know about the consequences of your actions. ought not to play, children ought not to play in the park after dark. ought they return to the camp. लास्ट एक्सरसाइज बट नॉट द लीस्ट वन. यहाँ पर हमें दिए हुए हैं इफ़ यू गो थ्रू द पैसेज केयरफुली यू विल फाइंड द एडवर्ब स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड. तो हमने जो है ये अपने कंप्लीट करने हैं. ये हमें दिए हुए हैं, हमने इसको कंप्लीट करना है. sedative, noise, furious, promise, careless, scarcely,
cruel, inefficient, hastily white presentation and several। अच्छा जी, यहाँ तक हमने जो है वो एक्सरसाइज डी तक अपनी कंप्लीट की है। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इसकी जो है वो 2 पार्ट्स रह गए हैं बुक के, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि वो है लेटर राइटिंग तो और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है हमने। तो इंशाल्लाह ताला तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।